Good morning to all. Myself, Professor Nidhi Joshi, and I am discussing about the subject image processing and computer vision. The subject code for the subject is CS803. In the previous classes, I was talking about the image representation and description. Basically, I was discussing about what is the segmentation, thresholding, cluster, spatial clustering, like different concepts that we had studied in image representation and description. In the today's session, basically, I will be going to discuss about what is the Hoe transform algorithm, and why we are using this Hoe transform, what is the rule-based segmentation and the motion-based segmentation. So let us start with what is the Hoe transform. Basically, the Hoe transform is a technique which can be used to isolate the feature of a particular shape within an image. Like particularly if we are looking for the particular feature from the image, particularly the feature, the object that or the particular shape from the image. So that time we are going for the Hoe transform. So because the Hoe transform, it required the desired features be specified in some parametric form. So generally for this reason, like either if we are talking about the image, so either we are looking for the particular shape from the image, the particular shape like the line, circle, ellipse, like if we are having some the group photo, and basically we are looking for the particular person from the image. So that time we need to isolate that particular shape from the image. So the Hoe transform, it required the desired feature be specified in some parametric form. The classical Hoe transform, that is basically used for detecting the curves such as the line, circle, ellipses, etc. Or in a very simple word, we can say like the Hoe transform, basically it will isolate the feature of a particular shape from the image. So, a generalized Hoe transform can be employed in application where a simple analytic description of the feature is not possible. Like uh, this, if we are looking for the particular shape from the image, so this is accomplished with the help of the Hoe transform. Due to the computational complexity of the generalized Hoe algorithm, we restrict the main focus of this restriction to the, like basically in my session I will be like more focused toward the classical Hoe transform instead of like what all generalized like the specific Hoe algorithm that we are going to use for the image. So despite its domain restriction, the classical Hoe transform retains many applications as most manufactured parts contain the feature boundaries which can be described by the regular curve. Basically, we are extracting the or isolating the desired shape from the image, from the picture. uh, the main advantage of the Hoe transform technique is that it is tolerant of the gaps in the feature boundary description, and it is relatively unaffected by the image noise. So it is not affected by the noise. Like with the noise, like some distortion is there in the image. So if we are extracting some feature from the image, so this if the effect that is caused by the noise is not there, is not going to affect the Hoe transform algorithm. So let us see a generalized or the classical Hoe transform algorithm. Like here I'm talking about we can uh, go for the curve detection. The curve detection using the Hoe transform. Like first what we are doing, we are quantizing the parameter space within the limit of the parameter A. After that, like form an n-dimensional accumulator array. What we are doing, we are forming an accumulator array with the structure matching the quantization of the parameter space. And here what we are doing, we are setting all the elements to 0. So if we are considering the image point, so we had considered the image point as x1 and x2 in the appropriate threshold gradient image. So what we are doing, like initially what we have done, we have set all the elements to 0. Now we are increasing all the accumulator cell to
we are increasing the earlier the accumulator cell, all the element that we had set to 0. So we are increasing all the accumulator cell of A if the image point x comma a is equals to 0. So here we are increasing all the accumulator cell. After increasing all the accumulator cell, we are increasing all the accumulator cell. So the new A of A is the summation of A of A plus A. So for all A inside the limit used in step 1. So after incrementing all the accumulator cell, next step what we are doing, we are considering the local maxima in the accumulator array that corresponds to the realization of the curve that are present in the original image. So first we have considered a parameter space, the one parameter that we have considered. Next we had considered the accumulator array. Initially we are setting the accumulator array, this array value, all the elements we are setting to 0. Next we are incrementing the value, and next we are setting the local maxima in the array that corresponds to the realization of the curve. So this is the general algorithm, but like how this algorithm works, this the whole technique is particularly useful for computing a global description of the features, like global description of the features. So where the number of the solution case need not to be known a prior, given a local measurement. The motivating idea, like why we are using the Hoare transform, the basic idea behind the whole technique for the line detection is that each input measurement indicates its contribution to a globally consistent solution. So हम लोगों का सिर्फ like purpose ये रहता है कि we are looking for the desired feature from the image, desired feature that can be of like we are looking for the particular image from particularly shape, desired shape like the curves, lines that we are looking from the image. So here we have considered a simple example, the common problem fitting a set of line segment to a set of the discrete image point. So here like we are having the 4 point. So like 3 different figure है, like कुछ हमारे पास set of points है यहाँ पे 1 2 3 4. So ये जो फर्स्ट वाला इमेज बता रही है, ग्राफ बता रही है, दैट इज शोइंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट. 4 पॉइंट है A B C D. सेकेंड जो हमारे पास ये है, लाइक हम लोगों ने यहाँ पे क्या है, वी ट्राई टू ड्रॉ इन वन स्ट्रेट लाइन विच इज कनेक्टिंग दिस 2 पॉइंट. सो फर्स्ट ये हम लोगों ने 2 पॉइंट जो है A B C D, तो A और D को हम लोगों ने कनेक्ट किया है स्ट्रेट लाइन से, और जो B और C पॉइंट है उसको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया है. फिर नेक्स्ट हम लोग ये जो थर्ड डायग्राम है, बेसिकली इसमें हम लोगों ने और पॉसिबल स्ट्रेट लाइन फिटिंग हम लोगों ने और पॉइंट्स को कनेक्ट किया है. तो वी कैन कनेक्ट दिस पॉइंट ऑल्सो ए बी पॉइंट ऑल्सो, दिस ए सी पॉइंट ऑल्सो एंड दिस पॉइंट ऑल्सो. तो उसके बाद लाइक हम लोगों को कुछ एक पैटर्न या हम लोगों को स्ट्रेट लाइन फिटिंग, हम लोगों को एक पैटर्न हम लोगों को मिला. वी कैन से इट्स अ ट्रायंगल पैटर्न ऑल्सो. This is A, C and D. This is the triangle. So basically ये वाला जो image है, that is showing like what are all the possible straight lines. So हम लोग एक further हम लोगों ने इस example को हम लोगों ने continue किया. We can analytically describe a line segment in the form. हम लोग जो भी हमारी एक पैरामीट्रिक और नॉर्मल फॉर्म में हम लोग लाइन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. We are using an equation that is describing a set of the line using the parametric or the normal notation is given by this equation, x cos theta plus y sin theta is equals to r. So where r is the length of the normal form to the origin to this line and is the orientation with respect to the x-axis. So this type of the equation you had studied in your some like 11th grade, I think so. So for any point xy,
on this line if we have considered some point like this point location is x comma y on this line, and r and theta are the constant. So here what we have considered the parametric description of the straight line. So if we are talking about this all the things, if I'm talking about particularly from this image के रेफरेंस में यदि मैं बात कर रही हूँ तो if in an image analysis context the coordinate of the point of the eight segments in the image are known and therefore serve as a constant in the parametric line equation. जो हम लोगों ने एक पैरामेट्रिक और नॉर्मल हम लोगों ने लाइन की इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर करी थी. So if we are plotting the possible r comma theta values defined by each point in the Cartesian line space maps to the curve in the polar parametric space. This point to curve transformation is the Ho transformation for the straight line. हम लोग जो भी है जो Ho transform है we are describing, यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहे हैं. सो हम लोगों ने ये है डिस्टेंस है और ये एंगल एक्स को यहाँ पे हम लोगों ने एक रैंडम पॉइंट कंसिडर किया एक्स कॉमा वाई ऑन दिस लाइन और आर और थीटा की वैल्यू दैट इज द कॉन्सेप्ट. और ये जो है दैट इज द लाइन, दिस इज द पैरामेट्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. तो विद दिस ये जो पॉइंट टू कर्व ट्रांसफॉर्मेशन बन रहा है दैट वी आर कॉलिंग इज द हो ट्रांसफॉर्म फॉर द स्ट्रेट लाइन. The transform is implemented by quantizing the Ho parameter space into a finite interval or the accumulator cell. So as the algorithm run हम लोगों ने एक कर्व का एक हम लोगों ने जनरल एल्गोरिथम डिस्कस किया था. सो दैट टाइम व्हाट वी हैव डन कि हम लोगों ने एक एक्यूमुलेटर सेल कंसिडर किया था जिसके अंदर ऑल द एलिमेंट्स उसको हम लोगों ने ज़ीरो सेट किया था इनिशियली. सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों का क्या रहता है, वी आर इंक्रीमेंटिंग दिस एक्यूमुलेटर सेल. सो जैसे ही एल्गोरिथम हमारा रन करता है तो ईच ऑफ दिस पॉइंट एक्स आई कॉमा वाई आई इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ discredited that is the r. हम लोगों ने एक डिस्टेंस कंसिडर किया है that is the angle theta. The curve and the accumulator cell which lie along this curve are also incremented. So resulting peak in the accumulator array represent a strong evidence that corresponding straight line exists in the image. So हम लोग मैथमेटिकली हम लोग एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन हम लोग कंसिडर करते हैं. कुछ पॉइंट हम लोगों ने कंसिडर करे तो उसकी दिस इज द लाइन इक्वेशन. सो इन द केस ऑफ द सर्कल द जो पैरामेट्रिक इक्वेशन रहेगी ऑफ दिस फॉर्म. सो ए और बी है दैट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल और आर है दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. सो the most important is why we are going for the Ho transform. The Ho transform can be used to identify the parameter of the curve which best fits a set of the given edge point. हम लोगों का पर्पस क्या रहता है Ho transform का कि we are looking for the desired shape from the image. This age description is commonly obtained from the feature detection operator. दिस जो एज डिटेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं हम लोग को एक डिज़ायर्ड फीचर या डिज़ायर्ड शेप हम लोगों को वी आर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द इमेज. सो क्या करते हैं इन शॉर्ट वी आर डिटेक्टिंग सम एज लाइन हम लोग कुछ डिटेक्ट कर रहे हैं तो एज डिस्क्रिप्शन इज कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम द फीचर डिटेक्टिंग ऑपरेटर आइदर वी आर यूजिंग द रॉबर्ट्स-क्रॉफ, सोबेल एंड केनी एज डिटेक्टर. हम लोग इन शॉर्ट कोई लाइन हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं या कोई एलिप्स हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं. तो दिस एज डिटेक्शन इज पॉसिबल फॉर दिस फीचर डिटेक्शन वी आर यूजिंग सम एज डिटेक्टर लाइक द रॉबर्ट्स-क्रॉफ, सोबेल और केनी एज डिटेक्टर. एंड मे बी नॉइज़ का इतना कोई इफेक्ट नहीं रहता है. इट मे कंटेन मल्टीपल एज फ्रेगमेंट्स corresponds to a single whole feature. So as the output of the edge detector defines only where the features are in the image, the work of the Ho transform is to determine both what the features are, काहे के लिए हम लोग फीचर डिटेक्ट कर रहे हैं, for what reason we are what the features are, like
what type of the detection and how many of them exist in the image. More than one ellipse, more than one line is there in the image. So what the feature is there, basically it will be showing it's a line feature, curve feature, like what the feature is, or like how many of them exist in the image. That was the basic use. So here we have considered an example of for the whole transform. So here we have considered a simple image. Simple image है, दो rectangle है, or like in a very simple words, two occluding rectangles. ये एक rectangle से ये एक rectangle है. This type of rectangle that we are calling it a occluding rectangles. So जैसे ही I had discussed about in order to detect a certain feature we are using certain edge detector. So here basically we had used the Kenny edge detector. So the Kenny edge detector can produce a set of the boundary descriptor for this part. So here we have seen the overall boundaries in the image, but this results is nothing about the identity we are looking for, the age of this image. So in this case we use the hoe or the line detection transform to detect. जब हम लोग रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टोटल इफ यू आर लुकिंग फॉर द लाइन सेगमेंट, लाइन हम लोगों को डिटेक्ट करनी है, तो यहाँ पे टोटल 8 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8. So in this case we use the hoe detecting transform to detect the 8 separate straight line of this image, thereby identifying the two geometric structure of the subject. So if we use the edge or the boundary point as the input to the whole transform, a curve is generated. हम लोग if you are looking for, यहाँ पे तो हम लोगों ने simple straight line हम लोगों ने detect करी है. If we are going for the edge or the boundary point as an input, so जो accumulator है we view as an intensity image, and after that it will look like this. So next is the histogram equalizing. The image allows us to see the pattern of the information contained in the low intensity pixel. हम लोग histogram equalization के बारे में बात करते हैं. पर्टिकुलरली यहाँ पे हम लोग क्या डिटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एज डिटेक्ट कर रहे हैं. तो लाइक इफ यू आर लुकिंग फॉर द लो इंटेंसिटी पिक्सल वैल्यूज, सो दिस इज द इमेज, ये हम लोगों को बता रही है दैट इज अ लो इंटेंसिटी वैल्यू. एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं ऑफ द होल ट्रांसफॉर्म. जो आर एंड थीटा द पोलर कोऑर्डिनेट द एक्यूमुलेटर स्पेस इज प्लॉटेड रेक्टेंगुलर, लाइक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे हम लोग कंसिडर करते हैं दैट रैप्स अराउंड दिस, लाइक मैथमेटिकली भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरलाइज हो ट्रांसफॉर्म. हम लोगों ने अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे दैट इज अ क्लासिकल हो ट्रांसफॉर्म. हम लोग जनरलाइज्ड हो ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करते. द जनरलाइज्ड हो ट्रांसफॉर्म इज यूज्ड व्हेन द शेप ऑफ द फीचर दैट वी विश टू आइसोलेट डजंट हैव अ सिंपल एनालिटिक इक्वेशन डिस्क्राइब्स इट बाउंड्री. जनरलाइज्ड हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अभी तक तो हम लोग एज कंसिडर कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन कंसिडर करते थे विच कैन बी वेरी इजी टू रिप्रेजेंट मैथमेटिकली यूजिंग द इक्वेशन. लाइक कुछ ऐसे फीचर्स रहते हैं which do not have a simple analytical equation which will be clearly describing its boundary. So in this case, instead of using a parametric equation of the curve, we use a lookup table. So in that case यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, we are using an analytic equation. यहाँ पे हम लोग lookup table यूज़ करेंगे that will define the relationship between the boundary position and the orientation and the whole parameter. Straight the thing that cannot be represented, जो हम लोग feature या हम लोग shape particularly we are looking from the image, वो that cannot be represented with a simple analytical equation. So that time हम लोग एक lookup table यूज करते हैं that will defining the boundary position and the orientation. So generalized हो transform है. So here what we are doing, we are using an arbitrary reference point. हम लोगों ने एक reference point consider करे है, suppose x y है.
So x reference, y reference points within the feature with respect to the shape, with respect to the shape, that is the distance r and the angle of normal lines drawn from the boundary to its reference point. लाइक हम लोगों ने यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हम लोगों ने कंसिडर करे हैं एक्स वाई, एक्स रेफरेंस वाई रेफरेंस हम लोगों ने पॉइंट कंसिडर करे हैं, और हम लोगों ने डिस्टेंस आर एंड द एंगल ऑफ द नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम द बाउंड्री टू दिस रेफरेंस पॉइंट, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द ओमेगा. और सेकेंड हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, लुकअप टेबल. Lookup table, that is the R table, will consist of this distance and the direction pair, जो कि क्या represent करेगी, boundary position and the orientation of the whole parameter. So जो R table रहती है that will consist of this distance and the direction pair indexed by the orientation of the boundary. हम लोग generalized हो equation हम लोग consider करते हैं. The whole transform space is now defined in terms of the possible पोजीशन ऑफ द शेप इन द इमेज. हम लोगों ने एक पॉसिबल एक का रेफरेंस पॉइंट हम लोगों ने कंसिडर करे एक्स रेफरेंस वाई रेफरेंस. सो द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इज डिफाइंड बाय दिस. जो हमारे पास जो पहले पॉइंट है इमेज के एक्स वाई, तो एक्स रेफरेंस विल गेट बाय दिस एंड वाई रेफरेंस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन. ये हमारे पास हम लोगों ने एक्स रेफरेंस वाई रेफरेंस हम लोगों ने एक आर्बिटरी रेफरेंस पॉइंट हम लोगों ने कंसिडर करे हैं, रेफरेंस हम लोगों ने कंसिडर करे हैं. यहाँ पे हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर करी है, ये एक एंगल हम लोगों ने कंसिडर किया है, और ये जो आर है डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द रेफरेंस पॉइंट. And x reference is given as a summation of x plus r cos beta. Y reference is equals to y plus r sin beta is given by this. हम लोगों का पर्पस ये रहता है कि हाँ लाइक कुछ फीचर्स या कुछ ऑब्जेक्ट हम लोगों को एक्सट्रैक्ट करने रहते हैं पर्टिकुलरली फ्रॉम द इमेज, लाइक विच कैन नॉट बी विच आर नॉट हैविंग एन arbitrary equation just like the line curve. So in that case what we are considering one reference point. reference point हम लोग consider करते हैं. reference point consider करने के बाद we are making a lookup table. lookup table वो एक जो lookup table रहती है, जो lookup table रहती है that will be basically it will be showing the position, the boundary position and the orientation of the whole transform parameter, so that the objects can be the desired object can be extracted from the image. Next we are having the area extraction, like if we are looking for the particular shape from the image, so the feature play a very important role in the area of image processing. Before getting feature हम लोग कोई बात कर रहे हैं, if we are looking for the desired shape from the image, so before getting feature various image pre-processing techniques like binarization, thresholding, resizing, normalization that are applied to the sampled image. Sampling में क्या करते हैं, we are dividing that image into a small part. So instead of working on the whole image, we are focused particularly for the smaller part of the image, जहाँ से हम लोगों को जो भी meaningful data that we required for the analysis purpose. After that, the feature extraction techniques are applied to get feature that will be useful in classifying and recognition of the image. The feature extraction techniques are useful in various image processing applications, like for the character recognition. The feature defines the behavior of an image. They show its place in terms of the storage taken, efficiency in classification, and obviously in that will consume the time also. So next we are having this the fitting
particularly will discuss in the next class. So today I discussed about what is the Hoe transform, what is a generalized Hoe transform, and what is an area extraction. That's all is there in the today's session. In case if you are having any problem, just let me know. Thank you.